दोस्तों, बैलेंसिंग का पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है उसमें। देखते हैं उसमें प्रॉब्लम में डेटा क्या दिया हुआ है। इट इज गिवन दैट ए रोटर हैविंग फॉलोइंग मास डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज 4 masses are given m1, m2, m3, m4 and respective magnitude is given. Their radial distance are given r1, r2, r3 and r4 from the center of rotation, and their respective angular positions are given theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, and again asked determine the amount of the counter mass at a radial distance of 80 millimeter and its angular position required for the static balance. Now let us solve this problem. Let us note down the first given information. Here 4 masses and the radial distance and angular positions are already tabulated here. The counter mass at what location is to be placed, that is balanced mass V d naught by RC is given is equal to 80 mm, and हमें दो चीज़ ढूंढ निकालनी है, बैलेंस मास या काउंटर मास जो सिस्टम को स्टैटिक बैलेंस के लिए चाहिए वो, और उसका एंगुलर पोजीशन दैट इज थीटा सी. नाउ फॉर स्टैटिक बैलेंस हम जानते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ multiplier of counter mass and counter radius, that is MCRC, is given by this relation, that under root of whole square of sigma mr cos theta and addition of sigma mr sin theta whole square. So we can also rewrite in this form as this negative sign is to be squared. Now we have to calculate these parameters sigma mr cos theta and sigma mr sin theta. Here there are 4 masses, so we can write first component sigma mr cos theta for up to 4 masses. This is for mass 1 m1 r1 cos theta 1. Similarly for mass 2, mass 3 and mass 4. On substitution of the values which is available from data, we substitute those values m1 r1 cos theta 1 and subsequently for all fours, and upon calculation we found that sigma mr cos theta is equal to minus 150.61 kilogram millimeter. And similarly we need to calculate this second component, that is sigma mr sin theta. Again we are writing individually for 4 masses, mass 1 for mass 2, 3 and 4, and upon substitution of values and calculation for 4 components for mass 1, 2, 3 and 4, we found that sigma mr sin theta is equal to minus 506.82 kilogram millimeter. So substituting these values of sigma mr cos theta and sigma mr sin theta in equation number 1, we can write MCRC is equal to under root of square of minus 150.61 plus square of minus 506.82, and we calculate the magnitude MC into RC is equal to 528.72 kilogram
millimeter. Now in the data, the counter radius RC is given is equal to 80 mm. So we can calculate counter mass MC is equal to 528.72 divided by RC, that is 80, and on calculation we found counter mass MC is equal to 6.60 kilogram. And for finding the angular position of this counter mass, again we know for static balancing that tan theta c is the angular position of counter mass is given by minus sigma mr sin theta divided by minus sigma mr cos theta. Upon calculation, substituting the values and calculation, we found that theta c is equal to 3.360, and hence it gives us theta c is equal to tan inverse of 3.360 is equal to 73.42 degree. Here both the numerator and denominator are positive, so this theta represents the first quadrant for the angular position of the counter mass. So we can conclude that 1. Counter mass required for static balance is 6.60 kilogram, and second, the counter mass is to be placed at given counter radius, that is RC is equal to 80 mm at the angle of 73.42 degree. So this is the solution of given static balancing problem, and this problem also can be solved by graphical method. So let us understand the graphical method for the same. Now let us see the graphical method. So for graphical method, we need to draw vectors of the magnitudes m1 r1, m2 r2, etc. So let us calculate first those magnitudes. So here from the given data we can write m1 r1 is equal to 5 into 80, that is 400 kilogram millimeter. Similarly m2 r2 is 600 kilogram millimeter, m3 r3 525 kilogram millimeter, and m4 r4 is 765 kilogram millimeter. And the angular position of all these vectors, as they are acting in radial direction, will become the theta 1, that is 40 degree, theta 2 125 degree, theta 3 250 degree, and theta 4 275 degree respectively. Here again a counter radius, that is the location of counter mass or balance mass, is given is equal to 80 mm. Here we have to draw the vectors on paper, so we need to consider some scale to draw the polygon. So let us take scale 10 kilogram millimeter is equal to 1 millimeter. So accordingly we can decide the length of all these vectors. So the vector length will be m1 r1 is equal to 40 mm, m2 r2 that is 60 mm, m3 r3 will be 52.5 mm, and m4 r4 will be 76.5 mm. Now let us start drawing the polygon means presenting the forces in respective direction. Dear friends, here we have to select the place and scale so that we can accommodate the entire diagram on a page. Understand? So what should be the scale and what should be the starting point for solving the problem will be should be decided in advance, and for proper judgment
वी नीड एक्सपीरियंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले आपको कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ से हम पॉलीगॉन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सो आई हैव टेकन दिस पॉइंट O as a starting point, understand, and I have taken a reference for this starting point, means horizontal we can say x axis and vertical y axis। उसके बाद हमें फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करना है, दैट इज m1r1 which is located at angle theta 1। तो theta 1 is given that 40 degree and m1r1 length is 40 mm। तो हमें एक्स एक्सिस से 40 डिग्री एंगल पर 40 mm का वेक्टर ड्रॉ करना है, अंडरस्टैंड। नाउ फ्रॉम दिस एंड पॉइंट ऑफ दिस फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा। यहाँ दोबारा हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है दैट इज रिप्रेजेंटिंग एक्स एंड वाई। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द सेकेंड वेक्टर विच विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड द length of the second vector m2r2 is 60 mm and its angular position is 125 degree। so आपको यहाँ से ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करके 125 डिग्री पे 60 mm का वेक्टर ड्रॉ करना है विच विल स्टार्ट एट पॉइंट B हियर। A से B, दिस बिकम्स आवर सेकेंड स्टेप एंड इट रिप्रेजेंट्स द m2r2। अगेन एट पॉइंट बी हमें इसके रेफरेंस पॉइंट बनाना है, वहाँ कोऑर्डिनेट फिक्स करना है बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। फ्रॉम हियर वी विल ड्रॉ ए थर्ड वेक्टर दैट इज m3r3 जिसका लेंथ है 52.5 और उसका एंगुलर पोजीशन है थीटा 3 250 डिग्री। तो हम यहाँ से 250 डिग्री एंगल पे थीटा 3 पे यहाँ वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ है 52.5 मिलीमीटर एंड दिस विल एंड एट पॉइंट C एट दिस। नाउ considering this as a starting point, we need to draw the fourth vector that is m4r4 and उसका लेंथ है 76.5 mm और उसका एंगुलर पोजीशन है 275 डिग्री। So starting from point C, draw a line that vector representing the length m4r4 is equal to 76.5 mm which will end at this point, it is D। Now as ये सभी वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद ये क्लोज पॉलीगॉन नहीं बनता है तो बताता है कि वो स्टैटिक बैलेंस नहीं है। तो पॉलीगॉन को क्लोज करने के लिए हमें एक क्लोजिंग वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा एंड दैट विल स्टार्ट एट पॉइंट D एंड विल एंड टू द स्टार्ट पॉइंट O। एंड ड्रॉइंग दिस वेक्टर दैट इज द फिफ्थ स्टेप रिप्रेजेंट्स द वेक्टर MCRC, that is a vector representing the force because of the counter mass, and this angle orientation of this vector with respect to the x as we have measured for all the cases that represents the counter mass angular position theta c। अभी हमें ये जो लेंथ मिला है D2O उसको मेजर करना है। सो बाय मेजरमेंट वी फाउंड that MCRC, this vector length D2O is equal to 53 millimeter। Now using the scale, converting the scale factor, the magnitude of the vector MCRC will be equal to 530 kilogram millimeter। Now RC is known to us, that is given is equal to 80 mm in the data, so we can find out MC, that is equal to 530 divided by RC, that is 80 mm, and we found it is 6.625 kilogram। And by measurement of this angle by the instrument, we found it is theta c is equal to 73.5 degree। So by this way we can solve the static balancing problem with graphical method also। आपने यहाँ नोट किया होगा
कि एक ही प्रॉब्लम को हमने ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड से सॉल्व किया है. सो हियर द आंसर मे बी लिटिल डिफरेंस एज द ग्राफिकल एरर इज prone टू एरर. ग्राफिकल मेथड से हम कुछ करेंगे तो मे बी पर्सनल एरर, मे बी मेजरिंग एरर, मे बी इंस्ट्रूमेंटल एरर, अंडरस्टैंड, डिपेंड्स ऑन ड्राइंग स्किल, ये सब की वजह से थोड़ा बहुत एरर आ सकता है. सो द ग्राफिकल मेथड आंसर्स मे लिटिल बिट डेविएट फ्रॉम द एनालिटिकल मेथड. सो इट इज़ नॉट टू वरी. By this way, we can solve the static balancing problem in by two methods, either mathematical or graphical. Still, आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे लिख सकते हो. मैं आपका हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करूँगा. यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस. थैंक यू वेरी मच.